वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर मोशन। ओके, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, विच इज मोशन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ मोशन। ओके, okay, let me give you first of all a scenario. A tree is here, right? Tree is here. So tree is, you will consider tree as what kind of object? We can say stationary object as it is fixed at one point, isn't it, right? या फिर कोई घर है, ठीक है, तो घर को भी हम क्या बोलते हैं? It is also stationary because it is fixed at one point. It is not moving, isn't it? With respect to if the person is here, right? Okay, okay. Not let's see कि with respect to किसके, but yes, it is stationary. But अगर हम humans की बात करें, हम animals की बात करें, हम birds की बात करें, so they all move from one place to another, right? Isn't it? So can I say कि जितने भी ये चीजें हैं जैसे humans, birds, animals, इनका एक common characteristic है, क्या है? They all are moving bodies, right? They all are moving bodies, मतलब जितने भी moving bodies की मैं बात कर रही हूँ, उनका एक common characteristic है, as they can move from one place to another. That is why I'm calling it as moving bodies. Pretty simple, right? So इनका एक common characteristic क्या है? The common characteristics is of all these moving bodies is that they change their position, isn't it, right? They change their position with respect to time. They change their position with respect to time, isn't it? So for example, आप सुबह अपने घर से निकले, तो मॉर्निंग में आप अपने घर पे थे, आप अपने फिर उसके बाद आप अपने स्कूल गए, अगेन आप अपने घर आए, राइट? Okay, so you are changing your position continuously with respect to time, right? It means you are moving, or I can say your body is in motion, isn't it, right? You are continuously, or you are continuously in motion or moving from one place to another when you are changing your position continuously with respect to stationary object. कैसे पता चलेगा कि पोजीशन चेंज कर रहे हो? कि घर तो यहीं, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है जिसके सामने एक पेड़ लगा हुआ है, आप घर से निकले तो इस पे ये पेड़ तो स्टेशनरी है, इसके सामने आप इसके रिस्पेक्ट में तो आपने आपकी प्लेस चेंज हुई और आप अपने स्कूल पहुंच गए, isn't it, right? Okay, so you are changing your position with respect to this tree. You're changing your position with respect to this house. So can I say motion is a relative word? Motion is a relative word because it is always relative. You are moving with respect to some stationary object or with respect to some other object, right? Let's see it clearly with one more example. जैसे कि ये प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, राइट? एंड ये आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, चलिए, ओके, यहाँ सामने से जा रही है एक ट्रेन, जा रही है जो कि चलती हुई जा रही है, मूविंग ट्रेन है ये, ओके। So you are stationary with respect to this train. You are not in motion with respect to this train. So same ये जो person है, earlier you were in motion with respect to the trees, but you are stationary with respect to that train. Okay, so motion is always relative. It is always in respect of some other object. Okay, I hope this is clear to everybody, right? So let's move forward. Okay, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ओके, या अब जब हमें मोशन क्लियर हो गया, मोशन हम समझ के बॉडी इज इन मोशन मींस इट इज मूविंग, और it is moving with respect to some other object, right? So every time you must keep in mind motion is a relative word, isn't it, right? Okay, so let's understand some other terms which are related to motion. This chapter, sorry, are distance and displacement. चलिए अब ये दोनों वर्ड्स का, ये दोनों शब्दों का मीनिंग समझना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर हम बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, हमें लगता है ये दोनों एक ही चीज है, एक ही तो है, क्या ही डिफरेंस है? पर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अगर आप यहाँ एक ए पॉइंट से निकले और आपको जाना है, मान लीजिए ई पॉइंट पर, आप यहाँ से गए ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट, फिर यहाँ से आप सीधे गए, यहाँ मुड़े, ओके, दिस इज नॉट सी, डी डी, एंड देन यहाँ से आप गए, ओके। सो दिस इज व्हाट, आप यहाँ से चलना आपने शुरू किया। सो दिस ए बी सी डी ई का ये जो पाथ है, ये क्या है आपका? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और कैन आई से जितना पाथ आपने पूरा कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ओके। So distance traveled by a body is the actual path covered by the body. Distance traveled by the body is the actual path or actual length of the path
actual length of the path. Can I say this? It is actual length of the path covered, right? It is actual length of the path covered, right? Okay. क्या है ये डिस्टेंस है, राइट? और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? एसआई यूनिट के डिस्टेंस की, इट इज मीटर. ओके. अच्छा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. इफ दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, यहाँ से चलना आपने शुरू किया और यहाँ तक गए आप, तो क्या है इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई. सो इट मीन्स the shortest distance, it is the shortest distance, displacement is the shortest distance between 2 points, right? It is the shortest distance between 2 points. What if अगर आप A से B गए, A to E गए सॉरी, और फिर वापस आप यहाँ से निकलकर इसी पाथ से वापस हो गए E to D, C, B and A, यहाँ पे पहुंच गए आप, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस वक्त डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए बी ऐड किया आपने, बी सी ऐड किया, प्लस सी डी ऐड किया, प्लस डी ई ऐड किया, और इसको 2 टाइम्स कर दिया ना, अब उसमें वापस भी आए. ओके. पर यही सेम चीज पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए से चलना आपने शुरू किया था और आप वापस ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो गया? 0, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही हो गया ना. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ए इज 0, isn't it, right? और इसकी भी SI यूनिट क्या है? The SI unit or the unit in which we can measure the displacement is meter only. SI unit is meter only. Okay, so this is one of the difference, right? Let's see other differences between distance and displacement. जब हम distance की बात करते हैं, जब हम distance की बात कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ path जो cover किया वो देख रहे हैं. So it is purely a scalar quantity. ठीक है? Scalar quantity का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, which is having only magnitude but no direction, है ना? डायरेक्शन तो हम कंसीडर नहीं कर रहे. डायरेक्शन हम किस में कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग द डायरेक्शन इन डिस्प्लेसमेंट. कैसे कंसीडर कर रहे हैं कि A to B गया, देन अगर वो B से वापस आ रहा है, वी आर कंसीडरिंग द डायरेक्शन, राइट? दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गया जब वो वापस आ रहे थे. सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. वेक्टर क्वांटिटी से मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो इसका भी होगा. मैग्नीट्यूड मतलब कि आप जिसमें उसको मेजर कर रहे हैं कि 10 मीटर है, 20 मीटर है, उसकी क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट है कितना? 20 मीटर है, 300 मीटर है ना? दिस इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो क्वांटिटीज व्हिच इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. ओके. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर between what is scalar quantity, what is vector quantity, right? So displacement is a vector quantity as it has both magnitude and direction. Okay. Okay, अब जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितना समझा है, क्या अगर चलिए उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें पूछती हूँ, है ना? क्या डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में 0 हो सकता है? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 0 हो सकता है? No, the distance cannot be 0 between any 2 points. If a body is moving, distance 0 कब होगा? Suppose मान लो ये A point है, अगर इसने यहाँ से चलना ही नहीं शुरू किया, if the body is at rest, then only the distance is 0. Let me write 0. Okay. Otherwise, it can never be 0. है ना? अगर उसने थोड़ा भी distance cover किया, it will have magnitude, isn't it? Right? अगर 0 है, इसका मतलब body is at rest, isn't it? So distance traveled by a moving body. So if it is at rest, it is not moving. So distance traveled by a moving body cannot be 0. But the final displacement, if we are seeing the displacement, yes, it can be 0. It can be 0. As we have seen, although वो person A point से B पर गया, then वापस A पे आया, so अब इसमें displacement क्या हो गया? Shortest distance between 2 points. इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है, एक, तो वो क्या था? क्या हो गया हमारा? 0. सो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0. बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0, राइट? ओके. विद दिस कैन आई से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा तो नहीं हो सकता, है ना? Isn't it? इस केस में
सब छोटा कौन सा होगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, isn't it? क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. इट मींस it can have the value lesser than that of distance. Displacement can have the value lesser than that of distance, isn't it? Right? So I hope now you all are clear with the difference between distance and the displacement. Okay? अब जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का, चलिए थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं. जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, let me change the color here. हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, है ना. कौन कौन से इंस्टेंसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कि अगर एक पॉइंट से चलना शुरू किया एंड देन इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट? इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम. और ऐसा कब हो सकता है? चलिए आप जॉगिंग के लिए जाते हैं कभी किसी सर्कुलर ट्रैक पे, जहां से आपने चलना शुरू किया, आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, आपको तो लग रहा है आपने तो यार 1 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 1 किलोमीटर कवर कर लिया. डिस्टेंस तो आपने जरूर 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट हेयर व्हेन यू कम टू हेयर अगेन, it becomes zero. When you again started traveling and then you come to here again, it again becomes zero, isn't it? So displacement on a circular track when you're covering the full circle becomes zero, right? Distance traveled कितना हो जाएगा इस केस में, अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं और अगेन एंड अगेन इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ए पॉइंट पे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी the circumference of the circle, isn't it? Right? So circumference of the circle is 2 pi r. But the displacement here is, what will be the displacement here? It will be zero, because the person is traveling from A to A, right? So the initial and the final points are same. So that is why displacement is zero. Okay. So I hope it is clear to all. Okay. So let's, before moving forward, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम. ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए. द प्रॉब्लम इज, लेट मी गिव यू द प्रॉब्लम. Let's write down the problem in red color. Yeah, the problem is a man travels a distance of, he started traveling and he travels a distance of 1.5 meter, 1.5 meter towards east, right? Okay, then 2 meter towards south and 4.5 meter towards east. Yeah, okay, right? So you have to find out total distance traveled, total distance and total displacement. You have to find out this. Okay, so how will you do this? How will you do this? So the question here is, let's try to make a rough diagram of the question. Yeah, let's change the color. So a man, let's suppose he has started from point A, right? Okay, he has traveled a distance of 1.5 meter towards east. So from A, east is this side. So he travels a distance of 1.5 meter. So your approach while solving any numerical question is, if the question is like this, try to make a rough sketch of the question, right? So he traveled 1.5 meter towards east, right? And let's suppose this is B point. Okay, then from here 2 meter towards south, then he traveled 2 meter towards south, and let's suppose this is point C, and he traveled 2 meter towards south, and then 4.5 meter east, then he traveled 4.5 meter east. Let's suppose this is point D. So we have to calculate the total distance. We know the total distance is actual path covered, so it will be 1.5 meter plus 2 meter plus 4.5 meter, which will come out to be 8 meter, isn't it? Now, what is the displacement? We know displacement is shortest distance between the 2 points, initial and the final point. So initial and final points are A and D respectively. So this is the shortest distance between A and D, isn't it? How will you find out the distance between A and D? If you see, this is a, if
How will you find out the distance between A and D, the shortest distance between A and D? So just measure the shortest distance between A and D, and when you will measure it, okay, in this case, you can see it or measure it manually, right? There is no need of calculation. This question is just to make you understand how can you calculate distance and displacement. So distance will be the total path traveled and displacement will be the shortest distance between the points, right? Okay. So it will be the shortest distance. Unable to change the color. Something has. Okay, just a second. Yeah. Okay. So AD will be the length of AD will be your total displacement. Okay. So when you will measure it, it will come out to be 6.3 meter, and it has to be either equal to distance or lesser than the distance. In any situation, it cannot be more than the distance. Okay. So I hope you are clear with the idea of what is motion, what is meant by motion. Motion is a relative word, right? And what is distance, what is displacement, how will you distinguish between distance and displacement? So we are keeping this video up to this only, and you can comment in the comment section, do you like the video or not, and you can always post your suggestions, and we'll come up in the next video with the topic of uniform motion and non-uniform motion. So stay tuned, we'll come up shortly. So with this, I am ending the video here. So thank you so much, all of you. So here I'm ending the video with this. So bye bye, take care.